So, hello guys, we had already covered up the introduction part of thermodynamics. I have already explained you what are the importance of thermodynamics in our daily life and how I have given you a fair idea of how vast the subject is, and I have also let you know that how small the part of syllabus of thermodynamics you are going to study. Okay? So thermodynamics is definitely a tough chapter, but the part of syllabus that you are having is not that much tough. It is just maybe 2 to 3% of the total thermodynamics as a subject that we study. So whenever I am talking about thermodynamics, you can see I am saying is as a subject. I am not saying it as a chapter. So you can understand it is a subject for me, but it is a subject for the world. It is a course for some people. Okay, it is a complete course for some people, and some people work on this field only, and we will be just studying a chapter on it, so nothing to fear about. So we have already discussed the importance of equation of states. Okay, there are various equation of states, Payne-Robinson, SRK, but we will limit our discussions up to Van der Waals equation of state only. Okay, so we will be knowing the ideal gas equation, that is PV is equal to nRT, and we will be having a fair amount of idea of Van der Waals equation in case of real gases. So now we will be discussing that beforehand you should know what you are going to get from this chapter and what you are not going to get from this chapter. So you must have a very clear understanding हमको थर्मोडायनामिक्स से क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है. तो देखो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं इधर लिखा हूं, दैट इज प्रेजेंट स्ट्रेंथ. ठीक है, ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ मतलब और प्रेजेंट वीकनेस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुडे इट माइट बी ए स्ट्रेंथ, नाउ दिस स्ट्रेंथ कैन बी एडेड. अभी जो आपको वीकनेस दिख रहा है, हो सकता है कल थर्मोडायनामिक्स उसको अपना स्ट्रेंथ बना ले. दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअसली something or the else is getting discovered, something or the else is getting incorporated into this subject. Lot of research is going on this subject, so this will be changing always. Okay, so for now at this moment thermodynamics has some strengths. So कुछ आपको thermodynamics से मिलेगा, clear understanding होना चाहिए कि ये आपको मिलने वाला है thermodynamics से, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये हमको नहीं मिलने वाला है. ये चीज हमको मिलने वाला है और ये चीज नहीं मिलने वाला है. ठीक है, सो लेट अस नाउ गो थ्रू अबाउट द स्ट्रेंथ्स. सो इफ यू सी द स्ट्रेंथ्स ओवर हियर, द फर्स्ट स्ट्रेंथ आई हैव रिटन ओवर हियर इज द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. फिजिबिलिटी मींस बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस. एक प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है. सपोज हमको कोई बोला, yeah, if I say you that whatever the air that you are having in your room, I want you to liquefy that air without decreasing the temperature. So you have to only increase the pressure and liquefy. Now that is not possible. Thermodynamically not possible. ठीक है? I have already explained this to you in my liquid state videos about critical pressure and critical temperature. ठीक है? So if it's above critical pressure and critical temperature, then only increasing pressure or only decreasing temperature will not do. You will also have to do both the things simultaneously. So why it is not happening? Why I could not liquefy this air just by increasing pressure or just by decreasing temperature? So let us take it very simply. Temperature आराम से समझ में आता है. So just by decreasing temperature, I cannot, thermodynamically it is not possible to liquefy the air. Okay, so that is what thermodynamics gives me. Thermodynamics says me the feasibility or possibility of process. ठीक है, thermodynamics says me air cannot be liquefied by cooling alone. It has to be some increased pressure and cooling. Both the things should operate simultaneously. Then only air can be liquefied. So this kind of feasibility or possibility of a process is guided by thermodynamics. So ये हमको thermodynamics से मिलने वाला है. ठीक है, we can understand the feasibility of a process. What is the next one? Laws of physical chemistry. Thermodynamics gives us, chemical thermodynamics gives us some laws related to physical chemistry which we can use to find out some properties, to find out some distribution.
Some of the laws you might be knowing, one is like Raoult's law, Henry's law, phase rule. This kind of rule, this you will be studying in other chapters. These things are already there in your syllabus in other chapters. You will be having all these things in class 12. Okay, so these things are there. Henry's law, some people have studied in class 9th, I guess 9th or 10th. Okay, so some law of physical chemistry is also given by thermodynamics, so that is also very important. So another is yield or extent. Suppose there is a chemical reaction or a chemical process happening. So thermodynamics gives me an idea that what will be the extent up to which this chemical process can go. What will be the maximum yield from this process. Maximum yield idea is given by thermodynamics. कितना maximum मिल सकता है, thermodynamically possible maximum product कितना है, ये आपको बता दिया जाएगा. thermodynamics आपको गाइड करेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उतना आपको एक्चुअली मिलेगा. ठीक है, कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट तो नहीं होता. थर्मोडायनामिकली हो सकता है आपको बोला गया आपको 100 मोल्स ऑफ सपोज एमोनिया मिलेगा किसी भी रिएक्शन से. ठीक है, हेवर्स प्रोसेस से थर्मोडायनामिकली हम बोल दिए आपको 100 मोल्स ऑफ एमोनिया मिलेगा बाय थर्मोडायनामिक कैलकुलेशन. आई से इट टू यू, बट एक्चुअली में आपको 20 मोल्स मिला. ठीक है, बट थर्मोडायनामिक्स आपको बता दिया कि 100 से ज्यादा तो आपको इस प्रोसेस में मिलने वाला ही नहीं है. ठीक है, आपको 100 से कम मिल सकता है बट 100 से ज्यादा नहीं मिल सकता. अभी क्या है, हमको अगर वो लिमिट पता चल गया कि हाँ 100 मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, देन आई कैन वर्क ऑन द एफिशिएंसी ऑफ माय प्रोसेस टू रीच टू दैट एज क्लोज एज पॉसिबल. ठीक है, उसका क्लोज जा सकते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर सकते. तो इस टाइप ऑफ फील्ड और एक्सटेंट कितना हो सकता है ये हमको थर्मोडायनामिक्स बताता है. थर्मोडायनामिक्स गिव्स मी एन आइडिया of the yield or extent up to which a chemical reaction will go through and give me some product. So yield कितना maximum हो सकता है, it gives me a fair amount of idea of that. The last and the most important one, last में आया बट लेकिन बहुत important है, property packages. इसको लेके हम लोग already बात कर चुके हैं. We have already talked a lot about these things, about different equations of state. So thermodynamics has given me different equations of state for different fluids at different temperatures and different pressures, which helps me calculate the properties of those fluids at different temperatures and pressures. Okay, so it has given me many equations of state. Okay, so that is a very important strength of thermodynamics that we have been able to explore by help of many scientists and engineers. They are working all over the world. Next, अभी वीकनेस, व्हाट आर वीकनेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स. देखो ये सब हमको अभी मिलता है थर्मोडायनामिक्स से. ठीक है, लेकिन क्या क्या चीज हमको मिलता नहीं है, पहले से क्लियर रहना चाहिए. ये चीज अभी तक तो हमको मिलता नहीं है, बाद में मिल सकता है, अभी तक मिलता नहीं है. नंबर 1, थर्मोडायनामिक्स इज इट कंसीडर्स ओनली द इन बल्क क्वांटिटी. ठीक है, बल्क क्वांटिटी का जो है वो मैक्रो व्यू है, मैक्रोस्कोपिक व्यू है, उसका सब प्रॉपर्टी आपको थर्मोडायनामिक्स से मिल जाएगा. थर्मोडायनामिक्स बेसिकली डील्स विद द बल्क प्रॉपर्टीज. ठीक है, मैक्रो प्रॉपर्टीज लेके वो डील करता है थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, माइक्रो प्रॉपर्टीज लेके डील नहीं करता है. इट डील्स विद द मैक्रो प्रॉपर्टीज. ठीक है, इट डजंट डील्स विद इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. इट विल डील विद प्रॉपर्टीज लाइक ओवरऑल प्रेशर, ओवरऑल वॉल्यूम, ओवरऑल टेम्परेचर. अभी उस ओवरऑल टेम्परेचर में एक मॉलिक्यूल में कितना टेम्परेचर है, दैट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नंबर 2, देखो I had said that it will give you the feasibility of a process. ठीक है, प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता है. ठीक है, इट गिव्स यू फिजिबिलिटी, हाँ ये पॉसिबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा, गारंटी नहीं है. इट गिव्स यू a पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, ये बोलेगा आपको कि हाँ ये प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है, पर गारंटी नहीं है कि वो प्रोसेस होगा ही. ठीक है, हो सकता है प्रोसेस पॉसिबल है बट नहीं हो रहा है, एक्चुअल केस में आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो. तो थर्मोडायनामिक्स गिव्स यू द पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस बट इट डजंट गारंटी यू सक्सेस. ठीक है, तो जैसे आप बहुत अच्छी तरीके से आईआईटी के लिए प्रिपेयर करोगे तो क्या होता है, ऑब्वियसली आई वोंट से नहीं लगेगा जरूर, लेकिन कभी कभी एक लास्ट फैक्टर रह जाता है कि लास्ट में आपको एक एग्जाम अच्छा नहीं गया. ठीक है, एक दिन का कुछ घंटा आपको अच्छा नहीं गया, बट नॉर्मली इट डजंट हैपन. इट हैपेंस इन मे बी 1 in 100 और मे बी 1 in 1 lakh.
ठीक है, कि एक एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया तो उसके वजह से आपको आईआईटी बॉम्बे जाना था तो आईआईटी बॉम्बे हुआ नहीं, लेकिन आपको दूसरा आईआईटी लग गया। तो आईआईटी बॉम्बे होने का पॉसिबिलिटी आपका हो सकता है, बट उसका गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है, उसका गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी आपको थोड़ा सा वो लाख फैक्टर के ऊपर तो डिपेंड करता है, ये तो आप लोग भी मानते हो आई होपफुली। तो हार्ड वर्क हमको क्या दे सकता है, जैसे मैं बहुत हार्ड वर्क किया, आईसीएसई आप लोग आईसीएसई सीबीएसई दे चुके होंगे, तो यू हैव वर्कड अ लॉट हार्ड फॉर योर आईसीएसई सीबीएसई मार्क्स इन क्लास 10। ऑब्वियसली 95% के ऊपर मिलना है, इसीलिए इतना आप लोग हार्ड वर्क किए, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट मे बी 98% marks. There is a possibility you will get 98% or 99% marks, but there is no guarantee that you will get exactly 99%, right? You may get from 95 to 99%. That's what I am saying. So if you are working really hard, you may get within top 3, top 4 IITs. That doesn't mean that you will get into the top IIT. ठीक है, वो नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा तो लक मैटर कर जाता है, ठीक है, बट वही है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आपको गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पढ़ाई आपको गारंटी नहीं दे सकता, आपका पढ़ाई आपको जरूर गारंटी दे सकता है, बट थर्मोडायनामिक्स कोई भी प्रोसेस का पॉसिबिलिटी बता सकता है, बट इट कैन नॉट गारंटी दैट दिस प्रोसेस विल सक्सीड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने इधर पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स में बड़ा एडवांटेज पढ़ा इधर कि यील्ड और एक्सटेंट, ये जो चीज है ये थर्मोडायनामिक्स आपको बता सकता है, ठीक है। Yield or extent can be guided by thermodynamics, but at which rate this yield or extent will come cannot be guided by thermodynamics, ठीक है। कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन से ये रिएक्शन चलने वाला है ये आपको थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता है, ठीक है, ये आपका थर्मोडायनामिक्स आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए दूसरा सब्जेक्ट है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इसके लिए दूसरा है बेसिकली दैट इज केमिकल काइनेटिक्स व्हिच विल स्टडी इन क्लास 12। मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स आपको एक प्रोसेस हो रहा है वो कैसे अंदर में कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म एग्जैक्ट क्या है वो आपको थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता है, ठीक है। पहले ही बोला ये बहुत मैक्रो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अंदर में कैसे क्या हो रहा है ये थर्मोडायनामिक्स का पार्ट नहीं है। थर्मोडायनामिक्स विल ओनली डील विद द मैक्रो प्रॉपर्टीज और द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द टोटल सिस्टम, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंट वीकनेस, ठीक है। अब ये सब नोट डाउन कर लो आप लोग। आई होपफुली यू हैव written down something that I have spoken also. I have not written much on the board. So after this we will be studying the other properties of thermodynamics which are very important. एक एक करके धीरे धीरे हम लोग घुसेंगे केयरफुली, ठीक है। पैर थोड़ा धीरे धीरे रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।